गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे करंट अफेयर्स सेशन में। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। Our greatest weakness lies up in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. इंडिया साइंस पैक्ट फॉर सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन मालदीव्स। भारत ने पैक्ट साइन किया है सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए। कहां पर? मालदीव्स में। Export Import Bank of India has concluded agreements with Fahi Dhiri-ul-Hun Corporation Limited (FDC) of Maldives to extend buyer's credit of around $228 million for the construction of 4,000 social housing units in Hulm Phase 2. The construction will be undertaken by National Buildings Construction Company and JMC Projects India Limited. The companies have rich experience in real estate development and civil construction projects both in India and abroad. तो देखिए, जो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो यही है कि भारत ने किसके साथ सोशल हाउसिंग यूनिट्स का पैक्ट साइन किया है। तो कंट्रीज मालदीव। मुंबई, बैंगलोर और लंदन जो हैं वर्ल्ड के टॉप स्टार्टअप हब्स में उनका नाम आया है। लंदन, मुंबई एंड बैंगलोर have featured among the world's top startup hubs according to a comprehensive ranking of international startup hubs compiled by Startup Genome for its annual Global Startup Ecosystem Report 2021. सिलिकॉन वैली टॉप स्पॉट पर है इस साल, जबकि जो बीजिंग और बोस्टन है वो 4th और 5th पर हैं। Despite Brexit and the coronavirus pandemic, London maintained its second place ranking tied with New York for the second year in a row. बैंगलोर जो है टॉप 30 ग्लोबल टेक हब्स में से है और दिल्ली जो है टॉप 40 लिस्ट में आती है, coming in at 36. Mumbai maintained its first position in the emerging ecosystems ranking, outperforming other fast-growing ecosystems in areas of funding, performance, market research and talent. इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ट्रेड पैक्ट साइन किया है मार्च 2022 तक का। इंडिया एंड यूएई हैव फॉर्मली लॉन्च्ड नेगोशिएशंस ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट एम्स एट एक्सपेंडिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू नेशंस। द फर्स्ट राउंड ऑफ सेपा negotiations held, both nations aimed to sign a deal in 6 months. A new strategic economic agreement between both nations is expected to increase bilateral trade in goods to $100 billion within 5 years of the agreement being signed and increase trade in services to $15 billion. हरियाणा gives note for implementing मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है नोट किया है क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस योजना के तहत जो है एक एश्योरेंस बेस्ड स्कीम प्रोवाइड की जा सकेगी ताकि जो भी क्रॉप लॉसेस होते हैं एडवर्स वेदर और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फार्मर्स को उनको कॉम्पेंसेट किया जा सके। इस स्कीम के अंडर फार्मर्स विल बी गिवन need to give only 2.5%, that is rupees 750 for vegetable and spice crop and rupees 1000 for fruit crops against a sum assured of rupees 30,000 and rupees 40,000 respectively. स्कीम ऑप्शनल है। जो सीड कैपिटल है rupees 10 करोड़ की will be kept by the state government for the scheme. एक्रा जो है यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 की क्या बन गई है? वर्ल्ड बुक कैपिटल। द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्रे अजाउले has named Accra, Ghana as UNESCO World Book Capital for 2023 following the evaluation of the World Book Capital Advisory Committee. After Guadalajara, Mexico in 2022, the city of Accra was selected for its strong focus on young people and their potential to contribute to the culture and wealth of Ghana. Accra's proposed program seeks to use the power of books to engage these young people as an effective way of skilling up the next generation. मैग्नस कार्लसेन ने जो है नॉर्वे चेस 2021 का खिताब जीता है। GM Magnus Carlsen received the Norway chess event for the 3rd time in a row and the 4th in whole. Like within the first half of the event, the world champion received the Armageddon Sport Award towards world title challenger GM Lan Nepomniachtchi, who got here 4th. GM Alireza Firouzja ended up beating and overtaking GM Richard Rapport to complete in second place, identical to final 12 months. गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जो है प्रेस्टिजियस किप्स अवार्ड से सम्मानित हुआ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM was announced as the winner in the best use of digital technology category at the KIPS
Excellence in Procurement Awards 2021 KIPS Awards. GEM emerged the winner in this category after competing with some of the biggest and best names in procurement across the public and private sector globally, including GEP, Jaguar Land Rover, Royal Dutch Shell, Ven Digital, and Shell. The KIPS Awards are one of the leading recognitions around procurement globally, which is conducted under the aegis of the Chartered Institute of Procurement and Supply, London. NHPC का जो 30वां पावर स्टेशन है उसको कन्फर्म किया गया IHA ब्लू प्लैनेट प्राइज से। NHPC का 510 मेगावाट का 30वां पावर स्टेशन जो कि हिमालयन स्टेट सिक्किम में लोकेटेड है उसको कन्फर्म किया गया प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज बाय इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, अ लंदन बेस्ड नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप एसोसिएशन ऑपरेटिंग इन 120 countries. The award for Teestavi Power Station was announced during the World Hydropower Congress 2021. The award had been conferred to Teestavi Power Station based on its sustainability assessment undertaken by a team of accredited lead assessors of IHA in 2019 using the Operation Stage tool of the Hydropower Sustainability Assessment Protocol HSAP of IHA. AICTE जो है सेटअप करेगी ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में फॉर इट्स आइडिया लैब इनिशिएटिव। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विल सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर इन हरियाणा सून फॉर इट्स आइडिया डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन लैब इनिशिएटिव, इट्स मेंबर सेक्रेटरी हैज सेड। AICTE idea labs are being established across the country to encourage students for application of science, technology, engineering and mathematics STEM fundamentals towards enhanced hands-on experience, learning by doing and even product visualization. Women's rights activist Kamla Bhasin जो है she has passed away. Eminent women's rights activist, poet and author Kamla Bhasin has passed away. She was 75. Bhasin has been a prominent voice in the women's movement in India and other South Asian countries. द फ्रैक्चर्ड हिमालय बुक लिखी है निरुपमा राव ने। जो बुक है जिसका टाइटल है फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस हैज बीन रिटन बाय निरुपमा राव and it has been released recently. The book traces how the origins of the dispute between India and China form part of a living history that shapes their fractious relationship today. The Long Game, How the Chinese Negotiate with India, book by Vijay Gokhale. बुक का टाइटल है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ऑथर्ड बाय विजय गोखले, हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली. This new book, former Foreign Secretary of India Vijay Gokhale unpacks the dynamics of India-China relations through the prism of 6 historical and recent events. बैंक डिपॉजिट्स जो हैं फिस्कल ईयर 2021 में आरबीआई के अनुसार 11.90% से ग्रो हुए. बैंक डिपॉजिट्स ग्रू बाय 11.9% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020-2021 compared to 8.8% in the previous year on the back of high growth in current account and savings account CASA deposits, the RBI data showed. Also, the share of CASA deposits increased to 43.7% in March 2021 from 41.7% a year ago, the RBI said. Among institutional categories, the household sector held 64.1% share in total deposits, the central bank said. Individuals were the major constituent of household sector and contributed 55.8% in aggregate deposits. Bank deposits of non-financial corporations surged by 18.8% during 2020-21 and their share in total deposits increased to 16.2%. In March 2021, the RBI said, among the stated Maharashtra, UP and Karnataka held 1/3 of total household sector's outstanding deposits and over 40% of its incremental deposits during 2020-21, the RBI said. So here friends, we reached to the end of our session and I hope that the content that was presented in the video is really helping you in your preparation. So do not forget to subscribe the channel if you are new to it. Do press the like button. And please comment your valuable feedback in the comment section below so that it can motivate me to make more such videos like this. And if you have any suggestions, any good suggestions, then you can surely put them in the comment section below so that I can work on them and make these sessions more relevant and more comfortable and good for your preparation.